हेलो फ्रेंड्स, फिर एक बार आपका जीके सीरीज में स्वागत है। लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट क्वेश्चन। हु वन द बुकर प्राइज इन ईयर 2025? ऑप्शंस आर डेविड सैले, किरण देसाई, एंड्रयू मिलर, बेंजामिन मार्कोविट्स। द राइट आंसर इज डेविड सैले। क्या आप जानते हैं रिमेनिंग ऑल दीज फोर वर involved in the race for a Booker Prize, but David Saleh was fortunate. There are many Indians who got the Booker Prize. यदि हम बात करते हैं बुकर प्राइज की तो जनरली ये जो प्राइज़ दिया जाता है वो इंग्लिश नॉवेल के दिया जाता है। तो बिगिन विथ V.S. नायपॉल, ये जो फर्स्ट इंडियन थे, उनके नॉवेल के लिए इन अ फ्री स्टेट इन द ईयर 1971 उन्हें प्राइज़ मिला था। इसके अलावा सलमान रश्दी फॉर हिज नॉवेल मिडनाइट चिल्ड्रन, इन्हें भी बुकर प्राइज़ मिला है। अरुंधति रॉय फॉर हर नॉवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, शी रिसीव्ड अ बुकर प्राइज इन द ईयर 1997. Apart from that, Kiran Desai for her novel The Inheritance of a Loss, she received Booker Prize. चलो आगे जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इन विच कंट्री इज द COP30 समिट हेल्ड? ऑप्शंस आर दुबई, अजरबैजान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट। द राइट आंसर इज ब्राज़ील। ब्राज़ील कंट्री के अंदर इन द सिटी बेलम ये COP30 summit was held, and you know the real theme for that was a climate change. All the nations participated, focus on climate change conference. Let us see the third question. Which day is celebrated as a education day? Options are November 14, November 7, November 26 and November 11. The right answer is November 11. This day is a birth anniversary of Maulana Azad. That's why this day is dedicated to our great first education minister Maulana Azad. Let us know the fourth question. Birsa, a tribal freedom fighter who fought against the British, belonged to which tribe in Jharkhand? बिरसा मुंडा जी किस ट्राइब को बिलोंग करते थे? ऑप्शन आर भील, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी गोंड, ऑप्शन डी मुंडा। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी मुंडा। बिरसा मुंडा जी बिलोंग्स टू मुंडा ट्राइब. This his birth anniversary, even also known as Janajatiya Gaurav Divas. He lived for just 25 years but was a hero. Or this year becomes very special because we are celebrating in the year 2025 his 158th birth anniversary. So let us begin with question number 5. Now, let us know who wrote the book Anand Math. Options are Bankim Chandra Chattopadhyay, Bharatendu Harishchandra, Munshi Premchand, Rabindranath Tagore. The right answer is Bankim Chandra Chattopadhyay. He wrote the novel Anand Math. क्या आप जानते हैं this Anand Math novel contain our first national song वंदे मातरम. इस साल इस सॉन्ग के लिए भी 150 years हो चुके हैं, इसलिए this 2025 becomes very special for the novel, for the work of Bankim Chandra Chattopadhyay and the Vande Mataram song. Let us see question number 6. Who is the Chief Minister of Bihar? Options are Nitish Kumar,
ऑप्शन बी ममता बनर्जी, ऑप्शन सी मोहन चरण मांझी, ऑप्शन डी डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा. द राइट आंसर इज नीतीश कुमार. दोस्तों, राइट आंसर ढूंढना है, इसका मतलब हमें तीनों में वो क्यों नहीं है ये भी पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल बी ममता बनर्जी, शी इज़ फ्रॉम वेस्ट बंगाल. यदि हाँ, सी ऑप्शन मोहन चरण मांझी की बात करते हैं तो ही इज फ्रॉम उड़ीसा. डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा, he is from Assam. So in that way we should know. So we will be able to find the right answer. Okay, let us move to the question number 7. Which country held the G20 summit in year 2025? Options are Indonesia, option B Brazil, option C India, option D South Africa. South Africa is the right answer. Who is a finance minister in the year 2025? Options are Rajnath Singh, B. Amit Shah, C. P. Chidambaram, D. Nirmala Sitharaman. The right answer is Nirmala Sitharaman. She is our finance minister. Name the first woman without arms to win a world title at the 2025 Summit World Archery Para Championship. Options are Deepika Kumari, Sheetal Devi, Nisha Rani Datta, Divya Dayal. The right answer is Sheetal Devi. Sheetal Devi received World Archery Para Championship, first uh, woman who has received this. Let's see question number 10. On which date is a Constitution Day celebrated in India? Options are November 26, January 26, August 15, and December 6. The right answer is November 26. This is a Constitution Day. That's all in today's GK News questions. See you. Bye.